Hello friends, good morning. Today is the 19th of January 2024 and this video will be in English. थोड़ा हिंदी थोड़ा English. And ये वीडियो में हम लोग देखेंगे in foreign exchange market, how the foreign exchange market movement is happening, कैसा चल रहा है और मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में टेक्निकली लार्जली फंडामेंटल डिस्कशन उतना नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट्स अ वास्ट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। बट इसमें मेरा जो टेक्निकल सेटअप है फाउंटेन ऑफ गोल्ड उसके जरिए देखेंगे कि मार्केट हमारे साथ क्या बात करना चाह रहा है। सो लेट्स टू हैव अ लुक एट दैट। लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन शेयरिंग में आगे जहां पे आगे वो है ट्रेडिंग व्यू। दिस इज अ ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन। इसका प्रीमियम वर्जन जरूर लीजिएगा। अगर डिस्काउंट पे लेंगे, जब ये लोग डिस्काउंट देते हैं, इट विल नॉट कॉस्ट मोर 60 INR पर डे अप्रोक्सीमेटली। सो दैट इज क्वाइट चीप गिवन इस इनका जो फीचर उनके पास है। सो इट्स क्वाइट अ चीप ऑफर, वेरी वेरी चीप ऑफरिंग आई विल से। So get surely don't means try to save your money in this kind of thing। कोई भी बिजनेस करना चाहेंगे तो उसके लिए एक कॉस्ट चाहिए ही होता है और दिस इज अ वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ एनालिटिक्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए डॉलर इंडेक्स पे। ये ट्रेडिंग व्यू पे मैं यूज करता हूँ मेरा सेटअप इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट SD रेनबो वेव वर्जन 1 अप्लाई and SDRSI-X apply. Since I will do foreign exchange, let's select the setup as Forex। Forex setup select कर रहे हैं और ऑटो ये रहा डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स जो दिख रहा है, द कैंडल इज ग्रीन, इट्स इन सो फार इन बुलिश कंट्रोल, बैकग्राउंड इज ग्रीन। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो बुल के हाथ में है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ये रहा ऑरेंज लाइन। यहाँ से जो रेजिस्टेंस लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे लास्ट डिस्कशन में, डॉलर ऑलमोस्ट रीच टू उसके पास, वहां तक पहुंचा नहीं। वी आर सीइंग अ करेक्शन बट ओवरऑल अभी भी बुलिश बुल का पकड़ ही है। मे बी इन लेटर स्टेज वी माइट सी अ कम बैक एंड फर्दर अप मूव इन द डॉलर। डॉलर को जो ड्राइव कर रहा है, तो जैसे हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात कर ही रहे हैं, तो डॉलर को जो ड्राइव कर रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। वो है बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट में हम लोग ये इंटरेस्ट रेट है उसका जो चार्ट है एक बार केयरफुली नोटिस करेंगे। ये यूएस का 3 मंथ्स का चार्ट। Overall, you can see the downtrend. Okay. So I think as Federal Reserve will cut interest rate, this will decline, but short-term bonds में price improve, मतलब price gain उतना नहीं होगा। Even अगर हम लोग long bonds हो गए, since this is very short-term bonds 3 months, तो उसमें price gain ज्यादा नहीं रहेगा। फिर देखिए 1 year आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डाउन मूव जो डॉलर को नीचे पुश कर रहा था, क्लियर डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, वी आर सीइंग एन अप मूव। ये जो RSI-X प्रीवियस पीक को तोड़ दिया, सो ये जो स्ट्रेंथ दिख रहा है अपसाइड, दिस इज नोटेबल। देन हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ अप मूव, अपर हैंड मूवमेंट आ रहा है ऑन द 2 year as well, दो 2 years। so this bond up move is positive for the dollar। फिर देखिए 3 years, जितना ऊपर जा रहा है धीरे धीरे बुलिशनेस बढ़ते जा रहा है, नोटिस कीजिएगा। जैसे जैसे वी लॉन्गर वी आर गोइंग द दिस इज गोइंग अप एंड दिस इज द 5 year interest rate now, fully green, red is disappearing। then look at the 7 year, much stronger, even higher the empty line के ऊपर। let's look at the 10 year, even higher than previous, above the empty line। look at the 30 year, see the move in 30 year overall interest rate in daily chart। from the bottom level it is once again up for both almost 35 36 basis points।
And this means actually short end of the curve, say longer end of the interest rate is going up, and this is bear steepening. At this stage of the cycle, a bear steepening in the bond market is not being taken well by the market. This is what anyway one of the fear of mine, that maybe we might see a bear steepening this time ये cycle में, इंस्टेड ऑफ अ बुल स्टीपनिंग, जो अब तक चल रहा था कि जो यील्ड कर्व है वो उस कई बाद में डिस्कशन करेंगे मे बी और एक वीडियो में, बट ब्रॉडली यील्ड कर्व नॉर्मल हो रहा है। यील्ड कर्व नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बुल स्टीपनिंग से हो तो वी गेट अ रेगुलर रिसेशन, बट आई होप वी डोंट गेट अ बियर स्टीपनिंग, एंड देन वी आर लुकिंग एट अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनारियो जो for not happened for a very very long time. So anyway, आज का डिस्कशन वो बात नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग ओवरऑल इंटरेस्ट रेट जो है लॉन्गर एंड ऑफ द कर्व faster moving up, and this is likely to push keep the dollar floated. So this will dollar is very likely to see some bid if I see overall level of interest rate is moving further. It can go down. I think it will once again Federal Reserve will give it a significant push to the downside. It might go for a surprise rate cut this next coming meeting. I can't March. I think they will definitely cut, but I am getting a feeling it's not a strong one yet. Means as per my model, the rate cut is coming in March, but sometimes you go like something inside you hints it may happen, like a sixth sense sort of. So which cannot be explained. Maybe it's experience or looking at the market. So this if this continues, this bear steepening. So I think Fed can go for a surprise rate cut in this coming meeting. And that would definitely be a dollar negative. So if dollar goes up, that's good. We can sell dollar or try attempting selling the dollar at focusing on the Federal Reserve का meeting जो आ रहा है 31st January at much higher rates. Because Fed is not currently, I don't think Fed is going to be a dollar positive event. At least Fed is going to be an interest rate negative event. And in such a case, dollar is going to be dollar negative event as well. So here overall dollar index, I think the जो March चल रहा है वो March में एक halt आया है. RSI X is curving lower. It's pretty dynamic, so we should not jump into dollar long. ये देखिए 125 मिनट्स चार्ट में RSI X is clearly moving lower, मतलब मोमेंटम बिल्कुल बायर्स के फेवर में नहीं है। ऊपर से हम लोग पीछे बैकग्राउंड इज ग्रीन, तो इसमें इंपॉर्टेंट अलर्ट जो है वो लगा दीजिए, ऑल्ट ए। शॉर्ट ट्रेंड बुलिश, मतलब बैकग्राउंड ग्रीन, वो अलर्ट मैं चाहता हूं, शॉर्ट ट्रेंड बुलिश। एंड एक ब्रेकआउट अलर्ट एट दिस लेवल क्रॉसिंग अप 103.57, एक अलर्ट ये लेवल पे 103.24 क्रॉसिंग डाउन, एंड शॉर्ट टर्म मोमेंटम इज करंटली बियरिश, एंड फुल बेचने के लिए मुझे चाहिए एक फुल बियरिश कैंडल विच इज प्राइस एक्शन बियरिश, price action bearish. One other alert I have placed. Another I will place is short momentums bullish. Dollar is very important, so it's dollar को various alert के जरिए नजर रखूंगा. So that's done. Dollar index analysis and trading is done. We'll come back with the alerts. So अभी चल रहे हम लोग यूरो यूएसडी पे. यूरो यूएसडी हैज बीन बियरिश. हम लोग एक कमबैक एक्सपेक्ट कर रहे थे 1.086, उसी के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है. इस लेवल पे फर्दर शॉर्ट ना करके वेटिंग विल बी अ मच बेटर आइडिया. सो डॉलर का जो लॉन्ग अगर मुझे खेलना भी है, इट डजंट सीम यूरो अभी जो ये एम्प्टी लाइन के पास है, इट इज नॉट लुकिंग लाइक द प्रॉपर काउंटर to play this. These are not properly placed.
They don't look like a proper counter to go for the sell trades. Let's look at 125 minutes. 125 मिनट में similar to dollar, we are seeing we can place an alert above crossing the 1.09, that kind of alert we can place. The short momentum, so minimum position डालने के लिए we need a price action bullish, so we can place a price action bullish means a full green candle alert. And let's go to Euro INR, Euro USD के साथ साथ Euro INR कुछ भी चलते हैं. Similar story, no clarity. We need a minimum price action bullish. So once again, Euro INR SD Rainbow Wave version 1, price action bullish. Price action bullish. That's it. Then हम लोग चले जाएंगे GBP USD में. GBP USD is first of all it is getting some bids, better performer क्योंकि UK का inflation rate higher आया है. So it is now expected that Bank of England will not be able to cut interest rate as fast as other central banks. So that is definitely interesting part that is fueling one side of pound. So one GBP is pushing above the long-term trend line. But overall, dekha jaye, it's in a mixed market situation. We do not have a full clarity. Best to avoid GBP. We are seeing some bullish push in the 125 swing frame, but it's still in a mixed market situation. It's best to place crossing up, short momentum bullish, and price action or short trend bullish alert with SD Rainbow Wave version 1. Short trend, sorry, bearish कर दिया मैंने. Short trend bullish. ये alert भी आ जाना चाहिए. Let's उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे GBP INR भी. फिर से वही एक मिक्स मार्केट सिचुएशन, अलर्ट लगा हुआ है. उसके साथ साथ जो अलर्ट हम लोग डाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रेंड बुलिश, alert. So these two are nothing to do with the GBP USD. इसमें clarity, lack of clarity is there. फिर हम लोग आ जाते हैं USD JPY और डॉलर येन पेयर में. इसको ट्रेडेबल है इंडिया में, NSE कॉन्ट्रैक्ट्स भी है अवेलेबल वाया धन, फायर्स, डिफरेंट अकाउंट. जीरोधा अलाउ नहीं करता, बट इट्स एनीवे लेस लिक्विड. और ये पेयर जो है वो आप जीरोधा में भी सिंथेटिकली क्रिएट कर सकते हैं. USD JPY अभी भी ऊपर ही जा रहा है. इट्स क्वाइट इन अ बुलिश एंड ओवरऑल. बैंक ऑफ जापान का मीटिंग आ रहा है सेंट्रल बैंक का. चलिए एक बार इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं. तो आप नेक्स्ट वीक का हम लोग कैलेंडर में आ गए. नेक्स्ट वीक का कैलेंडर लगाया हूं एंड उसमें वी वांट 2 स्टार इवेंट्स. इसमें बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन इज ऑन ट्यूसडे. दिस विल बी अ मेजर येन मूवर. I don't think Bank of Japan will do any change in the interest rate because with the earthquake and tsunami happening, though the damage is not like back in 2011 Fukushima Daiichi, but it is still quite high. To Bank of Japan, I don't think will change its monetary policy. Next, this week, जो important आ रहा है, some flash PMIs. This will be some movers, important movers. This is a major one that is coming. That is the European Central Bank interest rate decision. It will be a major euro mover. What is the tone of the European Central Bank? That will be important. Kitna jaldi wo rate cut or what type of rate cuts they might forecast. That market will be like to see. No interest rate change is expected, but उनका communication और टोन के ऊपर मार्केट ध्यान रहेगा. ECB का प्रेस कॉन्फ्रेंस है 7:15 पे.
with President Lagarde. फिर Thursday, January 25, another round of Friday, another round of important data is coming up. That is the PCE inflation data. If it drops, if it comes in neutral, I don't think we will see significant change. If the month on months come negative, then it's very good. Then the dollar index and the interest rate might see decline. But if it does not, if it increases month on month, then we might see an opposite push on the interest rate and the dollar side. Means on the bullish side, dollar and interest rate likely to go up. So two major events for the next week जो दिख रहा है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक and Bank of Japan, और उसके साथ साथ two important data is GDP, US GDP, US PCE inflation, and ये सारे flash PMIs. So इसमें ही these are will be the major movers. जो बाकी कैनेडियन डॉलर ये सब ट्रेड उनके लिए बैंक ऑफ कनाडा का भी इंटरेस्ट रेट आ रहा है, कैनेडियन डॉलर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सो वी आर लाइक नॉट लाइकली टू टॉक अबाउट इट. आई एम अवेयर ऑफ इट, आई हैव ट्रेडेड कैनेडियन डॉलर, बट currently it's this not our focus. So now let's get back to the business. It's the dollar yen. I'll remain on the bullish side. मेरा position भी है, so I'll continue with that. Next we have JPY INR, Nifty bear spread opportunity. So it's all getting alerted. JPY INR remains towards bullish. It's very likely moving towards this target. We have discussed this about our previous video. Further 40-50 paisa decline is possible. And this area 56.8 in the interbank market will act as strong resistance, 56.8 to 56.90. Japanese yen, I'm converting by multiplying 100 and telling you the rate. Then we have XAU USD, which is international gold. Let's look at international gold after a down move is showing a green socks in daily, which is a correction. It will be visible in the 125 minutes chart. कल मैंने स्टॉकेज सोशल पे ये हाईलाइट किया था. I post in the commodity currency group of Stockage Social. तो Stockage Social के इसमें मैंने हाईलाइट किया था कि येन का जो और गोल्ड का भी in the short term XAU USD appearance of a full green candle. So full green candle आया था, उसके साथ exit, and beautifully the exit was beautiful. Further buy move has happened, but it is gold is still broadly remains range bound. No major happening here in the daily. So 125 minutes chart पे यहाँ पे इंडिया का जो गोल्ड है, यहाँ पे एक बाई सिग्नल आया है. लेट्स बिकॉज दिस अ गैप अप अ बिट एंड फर्दर अप मूव आ रहा है. सो 125 मिनट्स में एक बाई सिग्नल आया है. दिस इज अ कॉन्ट्रैरी बाई सिग्नल. अब आपको देखना है कि ये डबल कॉन्ट्रैरी है कि नॉर्मल. So daily chart में is if I buy, if the buy is with the long trend or not, it is with the long trend and it is happening at a key support. So this could be an important bottom. यहाँ पे divergence भी available है. So let's change the setting to divergence. यहाँ पे देखिए लोअर बॉटम बना रहा है ये क्लाउड. सो सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस इज अवेलेबल जो बुलिश पुश देना चाहिए. और यहाँ पे एक बाइंग का सिग्नल भी आ रहा है, बट वी शुड कीप दिस बाइंग रिलेटिवली स्मॉल. डेली और 125 मिनट्स चार्ट दोनों एक साथ अलाइन नहीं है. और बेटर होगा कि एक बार गोल्ड ये 62,000 का सपोर्ट में जो टार्न रेजिस्टेंस है उसको क्लियर कर ले, एंड उसके बाद हम लोग पोजीशन पे मोर टुवर्ड्स मूव करें. एनी काइंड ऑफ लुकिंग दिस 125 मिनट शुड बी मोर ऑफ अ स्मॉल स्केल पोजीशंस. इसके साथ साथ हम लोग चलेंगे एक्सएजी यूएसडी में.
एक्ससीजी यूएसडी में भी सिमिलर पुश आया था एंड उसके बाद अब एक करेक्शन आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टारगेट इज रीच विच इज द एम्प्टी लाइन। इंडिया का सिल्वर, वी आर लुकिंग एट द सिल्वर मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें एक मार्जिनल बाइंग आ रहा है बट बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी जो है काफी लो है, इट इज 28%। और गोल्ड में अगर देखा जाए तो इट इज सिमिलर, बाई ट्रेड जो आ रहा है उसका भी विन प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, इट इज 29%। बट may happen possible that win come, but stop loss remains a bit far away from here because it's a contra trend. I use the max stop loss which if necessary, if there is a chance of reversal, जब ये रहता है ये जल्दी नीचे या स्क्वीज हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है मैक्स स्टॉप लॉस। अभी अभी मुझे ट्रेंड में रखना है इसको, सो दैट्स व्हाई ये स्टॉप लॉस अभी बिगर इज 61,584। तो ये कैंडल चालू हो रहा है 9 बजे से। सो नेक्स्ट कैंडल विल बी देयर अराउंड 11 o'clock। सो 11 o'clock के बाद हमें पता चलेगा व्हाट टू डू आफ्टर, बिकॉज ये कैंडल जो चाहिए एक फुल कैंडल चाहिए। ये फुल ग्रीन कैंडल एंड बाई सिग्नल आया है, बट बेटर कॉन्ट्ररी ट्रेड के लिए होता है कि एक बार बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए। तो इसमें जो भी पोजीशन डालना है वो स्मॉल ही डालना है। बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी इज इंप्रूविंग, इट इज 36% नाउ। नेक्स्ट हम लोग जिसमें आ रहे हैं दैट इज द एक्ससीजी यूएसडी और इंटरनेशनल सिल्वर और सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिल्वर, सीएफडी ऑफ सिल्वर। ये 125 मिनट्स करेक्शन हम लोग देख चुके हैं। डेली चार्ट में ये क्या चल रहा है देख लेते हैं। इट इज गिविंग अ करेक्शन इन डेली चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ सकता है एंड वी कैन गो फॉर फर्दर ब्रेकडाउन। यहाँ पे इंडिया में भी ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे, कल का जो मेरा क्लास था वी हैव डिस्कस्ड इन दिस whether a breakout may happen, may not happen right now. So it did not happen yet. The candle stop is around 72,420. But if the break comes, we can see some solid down move in silver. But so far, no break has come up yet. We are still waiting for the break to materialize. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रॉस करेंसी पेयर्स को। यूरो येन में मैं बुलिश हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा रन दे रहा है, इट इज सिग्निफिकेंटली गोइंग स्ट्रॉन्ग। कल करेक्शन के बाद इट इज वंस अगेन बैक, इट इज मूविंग स्ट्रॉन्गर। एक कल करेक्शन का चांस आया था हियर, करेक्शन अपॉर्चुनिटी वाज देयर। ये करेक्शन अपॉर्चुनिटी के बाद फिर से बाई सिग्नल आ रहा है विथ नाउ शॉर्ट मोमेंटम बुलिश। नाउ वी नीड अ क्लोजिंग of this candle which started around 740, means around 945 will be sure whether to add quantity or not. But interestingly, buy trade win probability जो दिख रहा है that is 89%। ऐसा जरूरी नहीं कि 89 हो तो वो सक्सेस होगा, बट एटलीस्ट दैट इज गुड कि 89% प्रोबेबिलिटी है कि ये जीतेगा। और यूरो का भी हम लोग देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इन अ राइजिंग मोड, जापान का भी इन अ मोर राइजिंग मोड, जापान इज अप भी है इंटरेस्टिंगली। तो यूरो येन में लिटिल केयरफुल होके छोटा पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी कैन थिंक व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द यूरोपियन सेशन। यूरोपियन सेशन में क्या हो रहा है वो देखते हैं। अगर ये फॉल्स सेल सिग्नल के बाद जब बाइंग सिग्नल आता है, ये बाई सिग्नल इज विद द ट्रेंड, so we later on the stage we might see some solid up move, maybe वो यूरो के स्ट्रेंथ से आए या येन का वीकनेस के वजह से आए, but this one is looking quite strong। फिर हम लोग और एक क्रॉस पेयर्स पे आ रहे हैं दैट इज द पाउंड येन।
पहले डेली चार्ट में देखते हैं, पाउंड येन अपना टारगेट रीच कर चुका है। द टारगेट दैट वी डिस्कस्ड अबाउट, दैट ये था लेवल, इट हैज रीच्ड एंड इट हैज मूव बियॉन्ड, इवन बियॉन्ड रीचिंग इट हैज मूव। नाउ इट इज targeting, this is the break level, so it is pushing high, it is pushing higher. So pound yen also looking quite strong here. Let's look at the daily chart. अभी तक कोई एग्जिट नहीं आ रहा है पाउंड येन का, सो बाय ट्रेड मींस इट्स स्ट्रॉन्ग एंड ऑनगोइंग बाय ट्रेड इन पाउंड येन। देन पाउंड येन कल जो एग्जिट सिग्नल आया था सेवरल येन पेयर्स के, उसके बाद फिर से बाय सिग्नल आ गया था रात को लेट नाइट, एंड सिंस पाउंड येन हैज ग्रेजुअली मूव्ड हायर, देख सकते हैं इस लेवल पे सिग्नल आया था क्योंकि 188 का ब्रेक हो गया, and उसके बाद it has been moving higher, it has moved 45 pips higher. I think it has now potential to test out the 190 level. थोड़ा RSI X में डाउन आ रहा है, सो थोड़ा मोमेंटम फ्लैटनिंग नेचुरल है क्योंकि आज फ्राइडे, वी मे नॉट सी अ मेजर अप मूव। सो after, if we exit, and now today it be another chance to once again get into some positions in the swing frame. Last is Euro GBP and USD INR. These two pairs I do not trade much because they are more range bound pairs. Both Euro and GBP tend to move in the same direction. This time we are seeing an exception because Euro has been weak and pound has been strong. So Euro yen after a correction heading for further breakdown. This is the reason I have been covering it lately. We are seeing a stronger move, which is not very usual. And another one is the USD INR, which is another range moving pair that is seeing some temporarily up move, but broadly within a range. RBI continues to defend. RBI defends, and this defense will continue. USD INR remains more of now a managed pair. तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।